जानना चाहते हो? The procedure of election of the president, or what is the meaning of single transferable vote system? What is your procedure? Single transferable vote system. single transferable vote system? Okay. First of all, you have to read that election of president. What is the meaning of election of how election of president? The procedure I am going to make you understand. The president of India is elected indirectly by an electoral college. ये इलेक्टोरल कॉलेज को आपको अगर डिफाइन करने दिया जाए कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है जो कि इनडायरेक्ट वे से प्रेसिडेंट को चुनती है, तो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। लोकसभा में जो भी जाते हैं और राज्यसभा में जो भी मेंबर्स बनकर जाते हैं, उनको हम लोग वोट करके भेजते हैं। तो ये इन लोग वोट करके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, इसलिए ये वर्ड लिखा गया है इनडायरेक्टली। उनमें हमारा डायरेक्ट हाथ नहीं है। जिनको हम लोगों ने इलेक्ट करके भेजा, वे लोग इलेक्ट करके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है स्टेट में? विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, या तुम विधानसभा, विधान परिषद भी कह सकते हो। ये हो गया इलेक्टोरल कॉलेज का मीनिंग। तो ये लोग चुनते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है। Nominated members of any house do not participate in the election of the president. Suppose कि किसी हाउस के, लोकसभा के कोई मेंबर को नॉमिनेट किया गया इस पोस्ट के लिए, तो वो व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यही आप लोग पूछ रहे थे कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है। तो ईच वोटर इज एक्सपेक्टेड, मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम? Each voter is expected to indicate his or her preferences on the ballot paper. बैलेट पेपर में हर वोटर क्या करता है? अपना प्रेफरेंस लिखता है। ठीक है। ठीक है। तो बैलेट पेपर में प्रेफरेंस लिख रहे हैं। मान लो कि हर कोई अपना प्रेफरेंस लिख रहा है। ये मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। ठीक है। ये दीज आर द प्रेफरेंसेस। मैं बता रही हूँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ईच वोटर will write their preferences. Each voter will write their preference. Okay. Then if the candidate or voters first choice is not, इस तरह का ये कोई एक पर्सन, वन पर्सन ने ये लिखा, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका चॉइस मिस्टर वाई फर्स्ट है, मिस्टर एक्स है, फिर मिस्टर जेड है। ये किसी दूसरे सेकंड पर्सन का ओपिनियन है।
हैं, सेकंड पर्सन के प्रेफरेंसेस हैं। फिर थर्ड पर्सन के प्रेफरेंस क्या है? थर्ड पर्सन के भी ईच वोटर विल राइट देयर प्रेफरेंसेस। इन्होंने भी हो सकता है कि मिस्टर एक्स को ही रखा है और मिस्टर जेड उनके सेकंड प्रेफरेंस है और मिस्टर वाई उनके थर्ड प्रेफरेंस है। अब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग में क्या होगा पता चलेगा। तो if the candidate's first preference is not getting elected, अगर काउंटिंग में मिस्टर एक्स आगे नहीं चल रहा है तो उसका वोट ऑटोमेटिकली किसको चला जाएगा? हिज सेकंड प्रेफरेंस। आप समझ लो कि मान लो कि ये भी व्यक्ति जीते नहीं, काउंटिंग में ये भी नहीं जीते, ये भी आगे नहीं गए, तो उनका वोट ऑटोमेटिकली थर्ड पर्सन पर चला जाएगा। अब हो सकता है कि यही व्यक्ति सबकी वोटिंग में यही आगे चल रहे हैं और मिस्टर जेड लास्टली बन गया कौन? प्रेसिडेंट। किसको प्रॉब्लम है पूछो। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस अगर इलेक्ट नहीं हुए तो मैंने 3 चॉइस दिए हैं, ऑटोमेटिकली मेरा सेकंड प्रेफरेंस मेरा सेकंड चॉइस चला जाएगा। इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफर हो गया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बताओ किसे नहीं समझ आया? अभी तुम कब आएगा? जाओ अभी ना, नहीं पढ़ना हो रहा है। आदित्य एनी प्रॉब्लम? जिसको कुछ प्रॉब्लम है तो रेज ही और शी कैन रेज हिज और हर हैंड। उसके बाद है a candidate is in order to be elected as president has to secure a quota that is an absolute majority of votes cast according to the following formula। ये जो नीचे का है ये कोटा, ये सर, ये पूछता जनरली नहीं है। पूछेगा तो वही कैसे इलेक्शन होती है, तो बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय an electoral college consisting of elected member of Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabha and Vidhan Parishad। ये 2 पॉइंट लिखना सफिशिएंट। और व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये भी मैं आपको बता दी। ये वाला ईच वोटर सिंगल ट्रांसफरेबल से लेकर के 1, 2, 3 पॉइंट आपको याद करने होंगे कि व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये जो ब्लॉक लेटर में लिखे हुए हैं ये ब्लॉक लेटर वाला पॉइंट, ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट ईच वोटर वाला लाइन और इफ द कैंडिडेट, ये 3 पॉइंट इसमें से लेकर आप आंसर लिख दोगे। अच्छा, अब बताओ एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी पर्सन? सत्यम राज एडमिट होना चाह रहा है बट इसमें कैसे करूं? यहाँ पे उसने नाम पता नहीं लिखा, कर देती हूँ, बोल देती हूँ। अच्छा बोलो, एनी अदर क्वेश्चन? देखिए आपके पास टाइम है, आपको जो पूछना है कोई आप ही बोलो। फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, चलो डिस्क्राइब करो। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन बोलेगा? The annual budget of the country is presented in the parliament in the name of president. Money will not be prior approval of president is essential before a money bill is introduced in Lok Sabha. He has the power to appoint members of the finance commission. Okay, next बच्चा
Explain. The annual budget of the country is presented in the parliament in the name of the president. Money bills in the Lok Sabha did not be approved without the president's approval. The president, he or she, has the power to appoint the members of the financial commission. Very good. Kritir bolo, Kritir. Ma'am. In the name of the president, the annual budget of the country is presented. Money bills also require his approval before they are introduced in Lok Sabha. The president has the power to appoint the finance commission. Ma'am, and the president can sanction money to the government out of contingency fund to meet the situation. Very good. Acha. Next question is, what is the function of the Prime Minister? What is the function of the Prime Minister? Who will say? आप लोग लर्न करके आओ और He forms council. जवाब. To form council of He- ministers, to preside He over the form- meetings of the cabinet ministers as well as the council of ministers, to coordinate the working of various departments. The prime minister act as a link between the president and the cabinet ministers. Okay. Srishti? To form council of ministers to preside over the meetings of the cabinet as well as council of ministers to coordinate the working of various departments, to advise the president about important appointments like that of chairman of UPSC, Auditor General of India, etc., to act as a link between the president and the cabinet. Ma'am, can Kritir? एक मिनट पुष्कर बोल रहे फिर तुम पुष्कर बोलो. Yes, ma'am. The functions of the Prime Minister are to form councils of ministers, to preside over the meetings of the cabinet as well as council of ministers, to advise the president to summon or prorogue the session or to dissolve the Lok Sabha before its term expires, to coordinate the working of various departments, to advise the president about important appointments like the chairman of UPSC, to act as a link between president and the cabinet. बोलो कृतिर. The functions of the prime ministers are to form the council of minister. Prime minister preside over the meeting of the cabinet as well as the council of minister. To coordinate various department working. To advise the president to summon or prorogue the session or to dissolve the Lok Sabha before its term expires. Prime Minister acts as a link between the cabinet and the president. To advise the president about important appointments like that of chairman of UPSC, Auditor General of India, Ambassador, etc. Okay. Acha. What do you mean by difference? What is the difference between cabinet minister and council of minister? Cabinet and council of ministers are not the same body. Council comprises cabinet ministers, minister of state and deputy minister, whereas cabinet ministers who are official and वायर से कनेक्ट बा members चार्ज करती है और पार्टीज. समझ में आया? ये आपको याद रखना है. ठीक है? क्या बोली? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर सारे आ जाते हैं. बट कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स हु आर इन्फ्लुएंशियल और इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ पार्टी और पार्टीज विच आर इन पावर.
अच्छा, इसमें से 1 मार्क्स में पूछ सकता है या 2 मार्क्स में, व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार मैं बताई हूँ, याद है ना? याद है? Yes, ma'am. बोलो, कोई बोलो, अंशिका बोलो। The council of minister works collectively as a team. All the minister become equally responsible to defend their acts and decisions. हाँ, So all the members swim or sink together. This is called a collective responsibility. वेरी गुड। अच्छा, और ये कोएलिशन गवर्नमेंट? When no single The party leader get of a 2 or clear more majority, then the parties leader of 2 or more combine parties come together, and or an join alliance is hands called together and upon form to the be the government. prime This type minister of and government form is the called government. coalition The government. government वेरी गुड। एक्सप्लेन द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। Ma'am, can Kriti? Explain the emergency power of president. Ma'am, the emergency power of the president are: first, national emergency. If the security of the country is threatened by war or external aggression or internal armed rebellion, the president can declare a state of emergency for the whole country. Breakdown of constitutional machinery in a state. If the government of the state is not being in accordance with the constitution, the president can declare emergency in the state. It is also called the imposition of president's rule in state. And last, financial emergency. When the financial stability of the country is threatened, the president can declare a state of financial emergency. Okay. Any other want to say? Yes, ma'am. The first, national emergency. If the security of the country is threatened by a war or external aggression or internal armed rebellion, the president can declare a state of emergency for the whole country. Second, breakdown of constitutional machinery in a state. The government of state is not being run in accordance with the constitution. The president can declare emergency in that state. It is also called imposition of precedent rule. Emergency. When the financial stability of the country is threatened, the president can declare a state of financial emergency. Very good. Explain the judicial power of the president. Other student, I want that you also attempt. Ananya, Aditya, Anushka, और बच्चे भी बोलिए। All the judges of the Supreme Court and the High Court, including the Chief Justice, are All the judges appointed by the of Supreme President. Court and High Court. On the appeal of mercy, the President has the power to reduce the sentence or grant pardon or amnesty. She or he can change the death sentence or can postpone it also. This is known as the judicial power of the President. Yes. शानवी बोलो, शानवी, तनुश्री, शानवी, तनुष्का, शरण्या, कोई भी बोलिए। Ma'am, can you repeat the question? The judicial power of the president. Ma'am, all the judges of the Supreme Court and the High Court, including the Chief Justice, are appointed by the President. On appeal for mercy, the President has the power to reduce the sentence, grant pardon, or amnesty. He can change the death sentence or can postpone it also. Okay. बोलो तनुष्का, बोलो तनुष्का। All the judges of Supreme Court and High Court, including the Chief Justice of India, is also appointed by the President. On the appeal of mercy, the President has the power to reduce the grant pardon. He or she can change the death sentence or postpone it.
Okay. Now explain the legislative power of the president. Shanvi, Sharanya, Tanushri, Soumya. Boys, Abhiraj, Yash, Tanan, कोई भी बोलिए. Legislative power of the president. बोलो वृष्टि, बोलो कोई भी बोलो, जल्दी बोलो. The president can summon, prorogue, or and address the two houses of the parliament. He or she can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its nominal term, if he or she is advised to do so by the Prime Minister. No bill passed by both the houses of the parliament can become a law without the president's consent. Prior approval of the president is essential before a money bill is introduced in the Lok Sabha. The first session, the legislative power of the president are: the first session of the prime minister begin with his address. He can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term, if she is advised to do so by the prime minister. Sorry, no bill passed by both the houses of the parliament. Prior approval of the president is essential before a money bill is introduced in the Lok Sabha. The 12 members of Rajya Sabha are nominated by the president from amongst the distinguished persons in fields of art, science, literature and social service, sports, etc. He can also nominate 2 Anglo-Indians to the Lok Sabha if the community is adequately represented. अपूर्वा बोलो, अपूर्वा. Yes. The president can summon, propose, and address the two houses of the parliament. She can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term if she is advised to do so by the Prime Minister. No bill passed by both the houses of the parliament becomes a law without his consent. Prior approval of the president is essential for money bill introduced in Lok Sabha. ओके. अच्छा, अब बताइए. What qualifications are needed to be a president? He who must complete A candidate 35 for years the of office of age. President of India He must be not- a citizen of India he who has completed 35 years of age. should be He qualified. should be qualified to be a member of the Lok Sabha and should not hold any office of profit under the government at any level. आदित्य बोलो, आदित्य. आदित्य तुम बोल रहे थे, बोलो. He must be a citizen of. He should not he should not be a member of Lok Sabha and Rajya Sabha. He must be 35 years of age. ओके. और कोई बोलो कोई. Yes, ma'am. To become a president, he or she must be a citizen of India. He or she must completed age of 35 years. He or she should be qualified to be a member of the Lok Sabha, and he or she should not hold any office of profit under the government at any level. अंशिका बोलो. To become a president, he or she must be a citizen of India. He or she must have completed 35 years of age. He or she should be qualified to be a member of Lok Sabha, and he or she should not be hold any office of the profit under the government at any level. ईशिका बोलो. ईशिका. ईशिका बोलोगी.
अच्छा, अब बताओ, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? Parliamentary form of government. In a parliamentary form of government, there is a close relationship between the legislature and the executive. Okay. Second point. There are two executives, nominal executive and real executive. Real executive. ये पैरा याद कर लेना. सेकेंड पैरा, Constitution of India provides for a parliamentary form of government. So there are two types of executives, real and nominal. Since India is a republic, the head of Indian state is an elected president. He or she is vested with all the executive powers, but they all are exercised by Union Council of Ministers headed by the Prime Minister. Therefore, the real executive is Prime Minister and Council of Ministers, whereas President, he is the nominal executive because he is bound to act on the advice of Council of Ministers. ये आपको याद रखना है. और यहाँ डू यू नो में साफ साफ दिया हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट, whereas प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. कुछ बातें डू यू नो को पढ़नी नहीं है, मगर कुछ बातें जानकारी के लिए, पढ़ाई के साथ उसका पूरा कनेक्शन है, तो उस डू यू नो को याद रखना ही बेटर है. ये लाइन का पूरा कनेक्शन है. जैसे वहां पे तुम्हारा कोएलिशन गवर्नमेंट या फिर कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पूरा कनेक्शन था, तो ये पढ़ना, तुमको पढ़ना ही था, तो ये अच्छी बात थी कि दिया हुआ उसमें, तो उसे याद कर लेना. ठीक है, इसको ये भी आपको, ये पैरा को इम्पोर्टेंट लिख लो, यहाँ से कई क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, चलिए आप बताइए और क्या बोलूं इस चैप्टर से. नेक्स्ट डे हम लोग किस चीज की मीटिंग कराएंगे? मीटिंग करेंगे, कौन सा रिवीजन करेंगे? Chapter 5. चैप्टर 5. 5 में क्या है? एग्रीकल्चर. Yes, ma'am. Agriculture. ओके.